तारीख है 7 जून 2022। समय हो गया है 11:11:24 PM। न्यूज़ 18 इंडिया का शो। अमन चोपड़ा साहब, आपके शो में एक मैडम जी हैं समाजवादी पार्टी से, सोमैया जी। मैडम, आपने एक सवाल पूछा है, इस्लाम का मामला जो भारत में है, इसको हम युद्ध क्यों ना कहें? आपका क्या मानना है? आपका क्या जवाब है? मैडम, यू आर इंसर्जेंट। आपके परिवार नातेदारों पे इंसर्जेंसी लगाई जाती है। समाजवादी पार्टी का सभी बैंक खाते, सारी संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया जाता है। युद्ध ही है। आप लोगों ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है। आप यकीन जानिए, जो भी भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ेगा, समझ में आई, जो भी कश्मीर के भारत के साथ होने के पक्ष में नहीं है, उन सब पे इंसर्जेंसी लगेगी, बगावत। मैडम, बहुत दुख होता है ये सुन के भी, ये जान के कि हमारे ही देश की आबो हवा में जीने वाला व्यक्ति हमारी तरह समाज में जीता है, और इसी देश के अस्तित्व पे लांछन लगाते हुए भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे स्लोगनों को दिखाया जाता है, वही मीडिया में। मैडम, मैं तो ऐसा ऑफिसर हूँ, फिर मेरे को पुलिस ऑफिसर बनना पड़ता है। मैं तो ऐसा ऑफिसर हूँ मैडम कि मैं तो मीडिया में रिपोर्ट भी ना आने दूँ, मैं तो काट गिरूँ सबको। आपको शायद पता नहीं है सोमैया जी कि मैंने जो है ना, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रह रहे खालिद और उसके गैंग को जेएनयू के अंदर ही काट देने का आदेश जारी कर दिया था। अब आवाज़ लगा के दिखाना जरा रोड पे आकर। अब इनके लिए एक ही तरीका है मेरे पास, जोइशों की एक रैली निकलवाओ और इनको जो है ना उसी रास्ते घुमाते घुमाते बाहर बॉर्डर की तरफ छोड़ाओ। चलो भाई चलो, और कोई तरीका नहीं है। समझ भाई? न्यूज़ 18 इंडिया एक बैनर है, उसमें काम करने वाले लोग ये थोड़ी है कि उसको वहाँ पे जो है ये बोल देंगे कि ये उनका हो गया। ये भारत है मैडम, मुझे विरासत में मिला है ये।
मेरा जब जन्म हुआ तो मुझे इस देश का नाम भारत ही बताया गया। और इसका ध्वज जो है, जो बताया गया, उसको तिरंगा कहते हैं। कब किसने बनाया नहीं बनाया, मैं इस बहस में तो पड़ता नहीं। ये ध्वज है तो है। अब इसको बचाने के लिए मुझे कितना ही बड़ा बदतमीज बनना पड़ जाए, चाहे मुझे रेपिस्ट बनना पड़े, चाहे क्रिमिनल बनना पड़े, चाहे पुलिस ऑफिसर, समझ में आई, चाहे गैंगस्टर, मैं चाहे चोर, मैं कुछ भी कर गुजरूंगा मैडम, चाहे आईबी ऑफिसर। मारते हुए मैडम मैं गिनूंगा नहीं, समझ में आई, गिनती नहीं देखता मैं। संख्या में आप चाहे कितने भी हों, भारत किसी धर्म, विशेष जाति या संप्रदाय की बपौती नहीं है। मान ली बात आपकी, मैं इसको ऐसे कह देता हूँ। परंतु कुछ ऐसा करने से यदि इनमें से किसी के भी द्वारा भारत की संपत्ति या उसके क्षेत्रफल में घटाव आ जाए तो मैडम कार्रवाई जरूरी होती है। फिर भारत का हर वो व्यक्ति जो इस सोच को समझता है, वो हर कोई पुलिस ऑफिसर है, वो हर कोई जो है मिलिट्री जनरल है, और ड्यूटी करनी पड़ेगी। उस कारण को हटा देना होगा। जनसंख्या तो फिर बन जाएगी। आज भारत की संप्रभुता बोलेंगे, भारत के प्रभुत्व को क्षीण करने की ताकतों को हम बर्दाश्त कर लें? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर हम जो है ये इन वीडियो को ना कुछ इस तरह से देखो आप। Why Mandal is abusing? Because Mandal is completely irritated now. पता है क्यों? We don't allow you to ask ownership of Kashmir if you are not Indian. If you are saying that you are a Muslim and you want the favorism of a favorism of a Pakistan, and you are doing the favor of Pakistan for asking Kashmir, we will shoot you, madam. In Hindi, समझ गए ना? जिन मामलों को लेकर के भारत के अंदर अपनी पावर को बनाने की इच्छा रखने वाले को हम बर्दाश्त नहीं करते। राज्य है, रियासत नहीं है आपकी मैडम, आप समझे? राज्य है, रियासत नहीं है। और रियासत की बात करोगे तो मैडम मैं हूँ चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश, मेरा साम्राज्य पूरी धरती पे है, ठीक है। पर अगर प्रजातंत्र की बात करोगे तो भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट इट कांट बी ओवर बाय द मोदी सरकार।
Modi Sarkar, what is Modi Sarkar? I don't know them. Narendra Modi was the Prime Minister. He was elected by the public, but he was not in favor of that the Kashmir is an integral part of India. He was silently is in mood to give the Kashmir to other nation. Oh, come on, yeah, no, no, no. If the Indian army, just because if they are saying that they don't know me, I don't know them. Well, why don't you check the population of Muslim on earth? Because every Muslim wants a Kashmir. I would like to ask you, where is Muslim? If you want to ask that where is Kashmir, I would definitely like to ask where is Muslim? Is there any Muslim left? Why is Muslim and how is Muslim? And where is Muslim? The world population of a Muslim suddenly fallen down by the 1.8 billion. Current population is 1.8 billion. 180 करोड़. विश्व में कहाँ 3,000 करोड़ के लगभग की आबादी के मुसलमान अचानक 180 करोड़ कैसे रह गए मैडम? And the population of Pakistan is now around only 12 lakh. What happened? Oh, it's really surprising to all of us. Now, how it could be possible that they will count the population of Pakistan? That's why the Pakistani is in mood to do the election. Maybe the possibility. The population of Muslim in India left only by the not more than 6 lakh. Oh, what happened? All are run to the Pakistan to fight for the Kashmir. You know it? This was a fact. आपको पता नहीं है कि भारत के अंदर जो है अब मात्र 6 लाख मुसलमान बचे हैं. पता है क्यों? क्योंकि सबके सब अचानक पाकिस्तान भाग गए और वहाँ से जो है क्या कहते हैं भारत के खिलाफ युद्ध लड़ना चाह रहे थे. पता आपको? नहीं मालूम. मैं रियलिटी बताता हूँ. यहाँ से गाड़ियाँ भर भर के मुसलमान जो है पाकिस्तान जा रहे थे. हम लड़ेंगे मुसलमानों की तरफ से भारत के लिए. Because that was the fatwa by the Shahi Imam Bukhari. Shahi Imam Bukhari or of Jama Masjid and Shahi Imam of Fatehpuri and from the Hasidic Evesi was sending Muslim to Palestine to fight with Jewish. लड़ते रहो. भारत से अचानक 22 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान पलायन कर गए. आपको मालूम है ये बात? पिछले 2.5 वर्षों में. And Modi was the leader and he was the SPG of Pakistan. Yes, he was. मोदी पाकिस्तान का SPG बन रहा था. And the Israel was in favor of Pakistan to get the Kashmir. अच्छा जी, हम किस लिए बैठे मैडम यहाँ पे? जिस दिन मैंने पहली बार ऑर्डर पास करने शुरू किए ना तो उन्होंने कहा मंडल ऐसा है, अब तूने जब ऑर्डर दे दिया ना तेरे से मिलने से ज़्यादा जल्दी ना हमें ये ऑर्डर पूरा करने की है. तू जानता नहीं है मैं, या तो पहले मिल ही लेता फिर ऑर्डर देता. मेरे तो बड़ा मतलब ही निकल गया. कह रहे तेरे से ज़्यादा मतलब ही हम. कह रहे करना क्या है? मैंने कहा पाकिस्तान एकदम खचाखच. कह रहे मंडल इतनी सी बात है. कह तेरे से बाद में मिलेंगे, पहले इनसे ही निपटाते हैं. इतनी जल्दबाजी में रहते हैं लड़के. हकीकत है. भारत से 22 करोड़ मुसलमानों की जनसंख्या पाकिस्तान पलायन कर गई और पाकिस्तानी आर्मी से हथियार लेकर के कश्मीर का युद्ध लड़ने आ रहे थे. ये क्या हुआ? ले आदम तो
इसी प्रकार कभी 3 करोड़ कभी 4 करोड़ मुसलमान जो है भारत से युद्ध लड़ने के लिए पाकिस्तान आ रहे थे। मैंने एक रिपोर्ट पेश करी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सीनियर अटॉर्नी जनरल को। मैं उन्हीं उन्हीं के अंडर में काम करता आया हूँ शुरू से। Then the senior attorney general asked to me, what is going on, Mr. Mandal? I said, sir, the report is that suddenly that the Pakistan, China, Azerbaijan, Armenia, Afghanistan and Iran and Iraq sent their army to grab the Kashmir from India. And what was your order? I said, nothing. I just asked them to nuke them. Eh? Yes, sir. That's it. Because they were day by day they are forwarding themselves to get the Kashmir. I asked okay, and I ordered to fire Agni. You really did so? Yeah, I did it. And they follow your order. Yes. Are you the person who was having the code to fire the nuke? Yes, I was the person. But you said your boys have enough enough power in their balls, they don't need to fire the nuke. I was lying, sir. Very wonderful and a very good liar. You lie to them and they understand you. I don't care whether they understand me or not. I did my job. I was the person who ordered to fire the nuke near to the Iran and Pakistan border. It was a wonderful blast. You watched it? No, I don't know. And how many you ordered to fire nuke? How many nuke you ordered to fire? Sir, it was more than 4,000. Eh? Where? It was so many areas. And they did it. No, I don't know. And how many is in pipeline left? I don't know. Are you confirming it? Yes. What happened to the Iran? I don't know. Why you don't know? Because I ordered to fire more than 50 nuclear missiles on Iran. Now where is the Iran? I don't know. And where is Saudi Arabia? I don't know. Why? Because I ordered to fire 25 heaviest nuke to the Saudi Arabia. Eh? What happened to Sri Lanka? I don't know. Because we have some report that suddenly some nation is ordered to fire so many nuclear missiles on them. Maybe your news is right. But the fight was going between the America and Russia. Yes, it was. And you ordered to fire the nuke to Iran? No, sir. I ordered to fire the nuke on my enemy. Why they asked to get the Kashmir? I told them no, I will not allow you to ask about the Kashmir. What happened with the Iraq? I don't know. What happened to the Israel? I don't know. Why I ordered to fire more? I ordered to fire more than 45 nuke on the Israel. When? It's 1.5 years back. Who fired the missile on Moscow? Because we have a complete report that someone fired a nuke on Moscow. Who did it? Ukraine. Zelensky? Yes.
Eh? They have a nuke? Yeah, they have. How many? I don't know. Moscow is there? I don't know. Ukraine is not responsible. Whatever was a result of a war in Moscow. How many friends you are using the nuke? Is it necessary to tell you? Simple. Okay. How many nuke you fire on the earth? No, we don't have a count. What is JSR Securities? This is JSR Securities, sir. This is JSR Securities. We start with hydrogen. What a wonderful introduction, sir. And who are you in JSR Securities? I am Hitesh Mandal, Chief of JSR Securities. Miss JSR Securities start the war with the hydrogen. Yes, sir. This is we have a smallest weapon. And who is firing? They all are the beggars and poor. They all are the poor army. They all are poor army, yes sir. They all are poor army. They don't have any, we have any. We have hydrogen, helium. And you used to fire. Yeah, so we are very much used to do fire on our enemies. We can show you if you like to ask us. We will file another hydrogen on a Moscow. Yes, we have. Hey? How many missiles you have? More than 1,90,000. With JSR Securities. Yes. What happened if Pakistan ordered to fire nuclear? No, sir, they will not. We bought all. And they sell it to you, yes. Why they sell it to you? I don't know. So you have a Hath and you have a Shaheen. Yes, sir, we have it. We bought it all. And where you are using, sir, we used 5 Hath and 10 Shaheen to Balochistan and Karachi. Eh? That's why there is no Karachi, no Balochistan. And what about the population? They all are in safe custody. Where? There. Simple. And why are you in so hurry? Because we are Hari Bhakt. Because we are Hari Bhakt. Okay, you are Hari Bhakt. That's why you are always in hurry. Yes, sir, we are Hari Bhakt and that's why we are always in hurry. Are you joking? No, sir. We are kidding. So should I send a report to Government of India? No need, sir. Why? This is personal. Why it's so personal? Because JSR Securities is private. And what about the Indian Army? They know themselves. This is their responsibility. We don't have any concern with the Indian Army. So whatever is happening in the entire world, it's your personal? Yes, a personal reason, sir. JSR Securities is a personal army. It's a completely private. So what we do now? You don't have to do anything, nothing, sir. But you are the person who are learning the law. Yes, I am in the mood to learn the law, but this time I don't have a time to learn the law. Why? I am undergoing the advanced training of United States of America's Navy SEAL. Okay.
What is the population of Pakistan now? So you can ask to Pakistan. I am not Pakistan. What is going between you and the women of Pakistan? This is not your personal issue, sir. Because we are getting so many calls from the Pakistan. They all are the stupid, sir. They use the stolen phone and the SIMs and they can call to anyone. But we are getting a very responsible answer from them. And what is that, sir? This is very personal. That you are in personal relation with a very dignified lady of the Pakistan. Sir, this is really ridiculous. They should have to call me now. Why they are calling to you? You lie to me. They should have to first call to me and contact to me. No, we will not allow the call from the Pakistan. Then why are you taking a responsibility to pick up the call? Should I send an Indian army to check it there? Why you send the Indian army to check there? That is the responsibility of JSR Securities, and that entire area is in our custody, sir. That is not your land, nor your responsibility. You can go and be busy with the Modi Sarkar. Are you taunting us? No, I am not taunting. This is reality. Did you send some army to the Bangladesh? No, no.